Hello everyone. In this video, I'm going to discuss NTA UGC-NET JRF June 2024 जो हमारा 18th June 2024 को एग्जामिनेशन हुआ था. With respect to that, specifically I'll be discussing Unit 1 Teaching Aptitude. इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब हम इस वीडियो लेक्चर में. For both shift 1 जो मॉर्निंग में हुआ था एंड इवनिंग में जो पेपर कंडक्ट हुआ था, राइट? So check your answers and prepare this content also, because जो previous year questions है I will discuss in this video how they are relevant and how they are being asked in your next UGC-NET exam. Okay, so watch this video till the end. It will be very informative for you. So, first question was this: knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice, is an example of self regulation, metacognition, self discipline, automation. Okay, so on your final examination day, you must read the question very carefully. Right? Answer to this question is metacognition. अब cognition जो word है that is related to द वर्ड माइंड. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कशन क्या की गई है? नोइंग दैट यू फाइंड एल्जेब्रा मोर डिफिकल्ट, आपको पता है कि जो एल्जेब्रा एज अ सब्जेक्ट है यू फाइंड इट मोर डिफिकल्ट दैन योर सिस्टर डज, बट दैट यू कुड इम्प्रूव विद प्रैक्टिस. आप एल्जेब्रा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, राइट? सो नोइंग अबाउट योर सेल्फ. Metacognition is इसका आंसर है. Why? Because metacognition is the ability to think about and reflect on your own thinking, learning, and problem solving processes, right? So in this example, you as an individual, you're aware of that whether this subject algebra is difficult for you or not. You're aware of when you know about yourself. ठीक है, ability to think about and reflect on your own thinking, learning, and problem solving processes. Now you're watching this video, prepare this term, that is metacognition, here itself. Okay, you are able to recognize the difference in ability compared to your sister. So when you are acknowledging the potential for improvement with practice, because आप यहाँ पे कह रहे हो ना कि I can improve it with practice. So when this concept is being discussed, the term is metacognition. Fine. So why I'm saying that previous year questions are very important for your next UGC-NET exam. Now, this term, this type of question was already asked. You can look onto this book. इस book में मेटाकॉग्निशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी जून 2021 के क्वेश्चन में आया हुआ है. दैट इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस बुक. ओके, देन the other three options I have explained them over here in detail, because जो students हैं उन्हें पता है, those who have this book, they know that I explain all the other options as well, because you never know next time जो है आपका question आ जाए self regulation, self discipline या automation के ऊपर. So you should be fully prepared, right? So I encourage all those students who have this book, they must prepare all this content very nicely. Okay. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2024 में शिफ्ट 2 में. शिफ्ट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकती हैं. आई हैव मेंशन्ड द शिफ्ट्स विद ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर. क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. अब ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल के ऊपर क्वेश्चन था. सो नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स. फर्स्ट इज ये जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जो मॉडल है, इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था अलॉन्ग विद दिस बुक टू माई स्टूडेंट्स हु हैव गॉट दिस बुक. ये क्वेश्चन 19th जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. I have provided you the resources along with this book, तो आप definitely check out कर लो. पेज नंबर 30 है. I repeat, पेज नंबर 30, 19th June 2023 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है. एंड ये डिट्टो यही सेम क्वेश्चन जो है 2023 में आया था, एंड they have also put it in June 2024 examination. ठीक है, तो why I am informing you all this, because it helps us to know कि how previous year questions are very important for every aspirant. ठीक है, बट अब अगर आप
प्रिपेयर्ड नहीं जा रहे हो, देन हाउ यू आर एबल टू टैकल दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये स्टेप्स दिए हुए हैं। So, enacting tactics and strategies, devising plans, setting goals, regulating learning, analyzing the task। ठीक है, अब ये एक कॉमन सेंस है दैट फर्स्ट जो स्टेप होगा वो ई होगा, एनालाइजिंग द टास्क। ठीक है, तो किसी भी और ऑप्शन में ई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्लियर कट जो है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो एनालाइजिंग द टास्क में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉमन सेंस, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी खुद से कर रहे हो, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एनालाइज कि मैंने करना क्या है, व्हाट नीड्स टू बी डन। जब आपको ये समझ आ गया कि मैंने करना क्या है, देन यू कैन सेट योर गोल्स। अब गोल्स जो हैं आपको पता है वो स्पेसिफिक होते हैं। देन जब आपने गोल सेट कर लिया तो दिस इज कॉमन सेंस, देन यू कैन डिवाइस द प्लान्स। अब गोल मेरा सेट है, what I have to do according to that goal, you can create a plan। create a plan means कि 1 week में मैंने ये टास्क कंप्लीट करने हैं, सेकेंड वीक में आई विल कंप्लीट दिस, थर्ड वीक में आई विल कंप्लीट दिस। सो व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो आप अपना प्लान जो है वो पूरा डिवाइस कर रहे हो। ठीक है, डिवाइस कर रहे हो मीन्स बना रहे हो। देन जब आपने अपना एक प्लान बना लिया, देन यू कैन स्ट्रैटेजाइज, इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, देन यू कैन पुट दैट प्लान इन टू एक्शन। ठीक है, रेगुलेटिव लर्निंग विल बी योर लास्ट स्टेप। रेगुलेटिंग मीन्स जो आपने लर्निंग की है थ्रू दिस साइकिल, थ्रू दिस प्रोसेस, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना प्रोग्रेस, या कोई भी अगर एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें लेकर आ सकते हो। ठीक है, सो ये जो स्टेप्स हैं they were easy to crack, and already as I have informed you it was provided in this book। all those who have got this book उन्होंने ज़रूर ये क्वेश्चन डेफिनेटली एज इट इज़ प्रिपेयर किया होगा, सो इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक। बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था on 19th June 2023 shift 2। okay, now next question, now next question is this, for ये again shift 1 का क्वेश्चन है, which of the following are the subdivisions of implicit memory। ठीक है, तो अब implicit memory, every aspirant should know that the topic of types of memory is a very very important topic, right। 2023 में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इस एक टॉपिक में से, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्प्लिसिट मेमोरी में जो फर्दर टाइप्स हैं, दैट इज प्रिमिंग, क्लासिकल, कंडीशनिंग इफेक्ट्स एंड प्रोसीजरल मेमोरी, राइट। ये जो एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी है, दीज रिलेट टू एक्सप्लिसिट मेमोरी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A, C and E। Fine. So I have covered the entire full-fledged topic of types of memory on page number 5 of my book, right? Because already जो 2023 में इतने सारे शिफ्ट्स में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो सारा जो कंटेंट है ना, आई हैव कवर्ड इन दिस बुक, सो दैट एस्पायरेंट को एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए एंड जो प्रिपरेशन है वो करनी बहुत ईजी हो जाए, राइट। सो टाइप्स ऑफ मेमोरी, all those who are going to give the exam, it's a very important topic, you must note it down। fine, next question जो है, जो आया था शिफ्ट 2 जून 2024 एग्जामिनेशन में, the question is, I believe I will do well in the class, in this class, Ram declared to his brother। I received a perfect score on the verbal part of the SAT। ये भी एक एग्जामिनेशन है, and I have always excelled in my literature classes, right? So Ram is demonstrating which of the following? Is he demonstrating high self-esteem, high levels of empathy, high self-efficacy in literature, low self-efficacy in literature? Fine। तो अब ये जो क्वेश्चन अगेन, अब जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, इट इज़ अगेन अ रेपिटेशन, राइट। सो आई एम फोकसिंग अपॉन द रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये जो हाई सेल्फ एफिकेसी की यहाँ पे बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन दिस बुक, it is already covered in this book, you must check out on page 17 of this book, you will find it out there। fine। so अब high self efficacy literature का मतलब क्या है बेसिकली, ये जो भी यहाँ पे राम स्टेटमेंट पास आउट कर रहा है, दैट शोज हिज कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज, राइट। सो he highlights that his perfect score on the SAT and his past excellence in literature classes, demonstrating a strong belief in his capacity to perform well in this class। This is a clear example of high self-efficacy। अब self-efficacy word जो term है, इसका मतलब क्या है? It refers to the belief in one's own ability to accomplish tasks and achieve goals। So as a UGC-NET aspirant, you must remember this term, self
एफिकेसी की टर्म याद रखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको दो ऑप्शंस दी थी, हाई एंड लो। तो दिस इज अंडरस्टूड, लो सेल्फ एफिकेसी इज नॉट द आंसर, हाई सेल्फ एफिकेसी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, so far you can see metacognition previous year question है, so you must prepare previous year questions, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ये एज इट इज ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का, अगेन रिपीट हुआ है। व्हाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू ऑल दिस, that look on to the importance of previous year questions, they do get repeated in one form or the other form, right? So definitely prepare करो previous year questions को बहुत अच्छे से, and इस book के through it becomes so easy because it is there in your hands, and सारा content जो है वो relevant content ऐड किया है इस बुक में, सारा रिसर्च वर्क एनालिसिस ऑलरेडी डन है, यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग द एक्सप्लेनेशंस। जैसे मैंने यहाँ पे सारी डिटेल दी है, तो वहाँ पे बुक में भी डिटेल में सारे टॉपिक्स जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, स्पेसिफिकली 2023 के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। द नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ। अगर हम क्लासरूम में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सो बाय यूज़ ऑफ दैट व्हाट टाइप ऑफ क्लैरिटी इज बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था डायरेक्टली, इट इज़ नॉट देयर इन दिस बुक ऑल्सो, दिस इज वन क्वेश्चन विच वॉज नॉट देयर इन द बुक, फाइन। सो अब इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस आप यूज़ करो एंड इसको समझ भी लो, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, एबीसी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज का क्या मतलब है कि जो टीचर है, हाउ ही और शी इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, और वी कैन से हाउ मच ही और शी इज competent enough to make use of that technology. So by clarifying instructional messages, course objectives and technological competencies, teachers can effectively integrate technology to support student learning, right? जो other options थे, experience of failures, while it is important for growth but it is not related to technology, then institutional indolence word है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, it refers to institutional laziness or lack of effort, it is not at all relevant to technology use. So answer to this question is A, B and C only. Fine. Now next question. अब 3 questions are left, ठीक है। There were total of 8 questions with respect to teaching aptitude in both the shifts. Now, next question is related to the topic स्वयं. So स्वयं जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, यू मस्ट प्रिपेयर द टॉपिक स्वयं, एंड जो मैंने पीछे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन सी दैट स्वयं की रिगार्डिंग जून 2024 में इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे कि ये क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो देवर 3 क्वेश्चंस, यू कैन सी द रेलेवेंस, एंड ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो बुक है उसमें है, सारा कंटेंट जो है इस बुक में, इन तीनों क्वेश्चंस का सारा कंटेंट पूरा प्रॉपरली एंड डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऑलरेडी आपका स्टडी मटेरियल बना पड़ा है, यू नीड नॉट टू राइट डाउन द नोट्स व्हाइल वाचिंग अ वीडियो, फाइन। सो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था, स्पेसिफिकली फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट था combination question, which of the following are the national coordinators appointed for swam courses, ठीक है। So you should know all the swam national coordinators. I have covered all this content in chapter 10 higher education system of my book, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी पॉइंट है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन schooling, this is not a national coordinator, fine. So that means A, B, C and E, these are the national coordinators, and all those who are following my YouTube channel, they must know कि national coordinators जो हैं अब currently कितने हैं, and which are the new national coordinators being appointed for swam courses, ठीक है। Do comment in the video below कि national coordinators currently कितना number है,
एंड विच आर द न्यू नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, ये कमेंट ज़रूर करना, अदरवाइज ये जो सारा कंटेंट है ये ऑलरेडी कवर्ड है बुक में। देन एक और क्वेश्चन आया 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर, स्वयं के रिलेटेड ये। सो 4 क्वाड्रेंट्स यू मस्ट प्रिपेयर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटीरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड। फाइन, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जो ई पॉइंट है, फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग लर्नर्स, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेंट, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं। सो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस कंटेंट वेरी नाइसली। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट की एनालिसिस की बात करें विद रिस्पेक्ट टू जून 2024, देयर वर टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी पे क्वेश्चन आया, मेटा कॉग्निशन पे, स्वयं पे 3 क्वेश्चंस वर देयर, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, सेल्फ एफिकेसी एंड क्लासरूम टेक्नोलॉजी। एंड विद द गॉड्स ग्रेस, out of these 8 questions, 7 questions are already covered in this book, right? So you must prepare previous year questions very nicely because उनकी definitely relevance है। And all those who have got this book, I will be providing all this content along with this book। जून 2024 के आपको सारे explanations जो हैं इस book के साथ मिलेंगे, because that is the relevance। ठीक है, जो भी नया content है वो update हर एडिशन में होता जाता है, एंड देन रेलेवेंस होती है एक बायर को बुक बाय करने के लिए। ठीक है, सो यू मस्ट गेट दिस बुक फ्रॉम अमेजोन, उसका लिंक जो है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू मस्ट ऑल्सो read the reviews of the book on Amazon before buying it, right? I provide various other resources along with this book। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है इस बुक में, you can always WhatsApp me on this number 9750000491। Thank you so much for watching this video। and जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई होप आपने जो आपको मैंने होमवर्क दिया था इस बुक में से जून 2023, दिसंबर 2023 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। उसमें सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर अप हो रहे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया, ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर्स हो गया, देन सारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग हो गए, काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स हैं। देन स्वयं डिटेल में कवर्ड है इस बुक में, स्वयं प्रभा के चैनल्स जो हैं 40 चैनल्स हैं, वो सारे के सारे इस बुक में नोट्स सब कुछ जो है ऑलरेडी डिटेल में कवर अप किया गया है न्यू बुक में। देन स्वयं प्लस, क्योंकि स्वयं प्लस नया टॉपिक था, उसके ऊपर नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑलरेडी बिन कवर्ड इन दिस बुक। सो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस एंड डू share this video with your friends, comment on this video so that more such videos can be made for your preparation। Thank you so